welcome back to my channel. So it's been a long time. Last trip खजुराहो गए थे and it got deleted. I'm so sorry. तो वो share नहीं कर पाई मैं. I don't know, something was wrong with the storage. But today I'm going to Delhi, to the National Modern Art Gallery. वहाँ पे Russian embassy ने 4 Russian artists को invite किया. So there's a watercolor workshop. जिसकी एंट्रीज इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट डाली थी. उसके थ्रू यू हैड टू ईमेल सम वाटर कलर वर्क्स एंड अकॉर्डिंगली दे विल सिलेक्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड देन 14th November को this workshop will take place. That's today. So I'm going there and I'm super excited to meet these wonderful artists and learn a lot of new techniques about their water palettes, about the kind of brushes that they use, from paper to their techniques to the kind of composition that they have in their mind, and what's their working process. So it's going to be a very informative session and I'll be sharing the bits with you all. So let's go. Finally reached the art gallery and the premises, and they gave me a ticket and now I have to go inside. Or fair workshop 11 o'clock started. They told us to report by 10:40, so I'm on time. That's good. Oh, then everything over there and begin, and I'll share all the details with you guys. So firstly, I'm going to do an outline of the model. Just it will take maybe 15-20 minutes. I'm going to. The paper is too big. Maybe I will frame it eventually. Yeah. Are going to mix. We need to use 3 basic colors like yellow, blue, and red. It might be like lemon, orange for red, and blue for blue. It might be like ochre for yellow, like black for blue, and some brown for red. So it's like depends on the situation. Больше. Побольше, да. Ну, я буду стараться. Я типа не настаиваю, просто я понял, что надо. сказал, что для галереи мы подарим натюрморт. Для галереи натюрморт.
Там, да, нет, ты специально подали. Хорошо. И будет знать, что идешь. That's it for today. I hope you liked this video and it was an amazing day. So basically जो रशियन आर्टिस्ट होते हैं उनकी क्या टेक्निक होती है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल वाटर कलर्स, बिकॉज वाटर कलर इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, बट जिस तरह से वो यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा ओपेक वे में यूज़ करते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स ऑफ वाटर कलर्स. बट हर मीडियम का एक अलग तरीका होता है. बट स्पेशली इन स्टिल लाइफ, इफ़ यू नोटिस, स्टिल लाइफ ज़्यादा ओपेक थी एज़ कम्पेयर टू द पोर्ट्रेट में फिर भी देयर वर सम ट्रांसपेरेंट एरियाज इन द मिड टोन्स एंड द हाईलाइट्स. सो दैट वाज गुड. मोर ओवर जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रेट स्टार्ट करा था, सो ऑल ऑफ द 4 आर्टिस्ट, सबका डेमो एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ था. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू वॉच एवरीबडीज डेमोन्स्ट्रेशन. सो यू पिक आर्टिस्ट एंड उसको अच्छे से देखो बैठ के, तो आपको समझ भी आए प्रोसेस. अदरवाइज लाइक थोड़ा यहाँ देखा थोड़ा वहाँ देखा, उसमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्ट है क्या चीज़. मैं जिनका डेमो मैंने देखा था, ही स्टार्टेड विद अ वेरी ब्राउन टोन फॉर द फेस. उसको देन ही लिफ्टेड द लाइट एरियाज एंड द हाईलाइट्स फ्रॉम दैट कलर. उसके बाद उन्होंने हेयर में डार्क टोन्स दिए. देन जो पूरा फेस था उन्होंने विद अ ग्रीनिश ब्राउन टिंट उससे मिड टोन्स वगैरह डाले उन्होंने बीच में. एंड देन लेटर ऑन उसमें शेडोज़ हल्के हल्के प्लेस करे उसी में. एंड यूजुअली वो ब्राउन एंड ग्रीनिश ब्राउन उस टाइप का कलर था. लेटर ऑन ही एडेड पिंक्स एंड reds in it with the technique glazing. So glazing is basically using a transparent layer of color on top of other layer. So इसको oil paint में usually ज़्यादा यूज़ करते हैं, that you do a normal tone and उसके ऊपर glaze कर करके ज़्यादा 3D effect आता है oil paints में, especially because linseed oil use करता है. So it's a very used techniques especially by the old masters in creating figurative. ये एक डिफरेंट थी कि उसको एक पोर्ट्रेट में भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू ऐड दोज पिंक एंड फ्लैश टोन्स टू अ पोर्ट्रेट. मोर ओवर जो ये डेमोन्स्ट्रेशन था, इट हैपेंड आउटसाइड इन द आउटसाइड एटमॉस्फेयर. तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम वॉज ऑफ लाइटिंग एंड जो वाटर था वो बहुत जल्दी ड्राई हो रहा था. सो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी पैचेस पड़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. सो यू हैव टू हैंडल इट वेरी क्विकली, अदरवाइज़ फिर वो पैच पड़ेगा, देन यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. तो वो ज़्यादा मडी एंड ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेयर्स में भी आप काम नहीं कर सकते. मिनिमम लेयर चलो 5 लेयर्स कर दोगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा यू कैन नॉट डू. तो दैट वाज वन थिंग. अदरवाइज इट वाज अमेजिंग. वहाँ पे जतिन दास सर का रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन भी चल रहा था. सो इन बिटवीन हम वहाँ भी गए. वी मेट सर एंड पूरा उनका एग्जीबिशन देखा, उनके स्टार्टिंग से लेके अब तक के. देवर स्केचेस ऑल्सो, देवर कॉम्पोजिशंस एंड एवरीथिंग.
So that was also a very good experience, and you get to know a lot of people. मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बहुत टाइम के बाद एक्चुअली मैं अकेले किसी एग्जीबिशन है इसमें, तो आई ऑलवेज गो विद अ ग्रुप एंड आई डेफिनेटली मिस देम, बट इट वाज गुड एंड आई कीप ऑन शेयरिंग सच स्टफ विद यू गाइस. जब भी नेक्स्ट टाइम मैं जहाँ भी जाती जो भी मैंने शेयर करा, जितना मैं कर सकती थी अकॉर्डिंगली आई कुड शेयर. पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड करना एंड शेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल, सो आई chose some clips and all bits and pieces from here and made this video. I hope you liked it and thank you so much for watching. Bye.